नानक को फ़ोन करती रही, सबको करती रही, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। एसएसपी नानक ने तो मुझे इतना बेइज्जत किया है एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ। आप लोग बोलते हो ना लेडीज़ फर्स्ट, वहाँ मुझे लेडीज़ फर्स्ट क्या लेडीज़ लास्ट, इवन एक मतलब जो चपरासी है उनके घर उससे भी पीछे रखा। एंड मतलब आई एम टेलिंग यू सच काइंड ऑफ ऑफिसर शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज। He should hang his uniform for doing injustice to a brother officer's wife. Absolutely. Shame on that bloody. Shame on SSP Nanak. Everybody, shame on SSP Nanak. After that, this is a shameful act. And Kumdare Jadu Joshi Ahmad ne kya? Nothing doing. Now it is 48 hours and SSP Nanak did not even have a courtesy to call my husband once or come and meet him, until and unless Joshi One Ahmad Div called him and said action to be taken immediately. There will be suspension, nothing doing. Let the inquiry start. Whoever is at fault, we will see it then, but the inquiry suspension should be done. He requested कि 3-4 को suspend कर देते. He said nothing doing, all 12. Because my husband said, I said all 12. Then he said suspension. Next day he calls the media and he says, first he told us कि आप मीडिया को मैं नहीं बता सकता because मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ जाएगा, मेरे को यहाँ जाना पड़ जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा. And then he calls the media and he says Colonel P.S. Barth and Angad Singh Barth beaten by 12 incident of 12 police officials. तो ये जो इंसिडेंट्स है वे बहुत बुरा है. मैं आर्मी से माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये 12 बंदों को सस्पेंड करता हूँ. I want to ask him again in front of the press and I want all army men, all civilians, everybody, हर एक जनता को बोलती हूँ, पूछो उनको, जब एक कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात who is senior to you, when you can name him in the media, then why can't you name your 4 SHOs? What was the reason behind not naming his 4 SHOs? He cannot name his 4 SHOs and 3 inspectors and 4 SI छोटे ये जो drug money, they get him all illicit things. SSP Nanak is a coward as much as these 12 people. That's my son Angad Singh Bhatt. We belong to Tumek, the Royal Jats, and we fight like a fighter and we will die like a fighter. We army, we don't back out. अगर हम बैक आउट कर जाएं तो पूरे उग्रवादी आके इंडिया को मल लेंगे. Then this I will continue after that. Then ये FIR हुई नहीं, सस्पेंशन करके इन्होंने सस्पेंड. I called him up. I said, why are you not telling the names of the? बोला मैम that you will come to know. And he told my husband, मैं शाम को आपको ना सस्पेंशन की लेटर दिखा दूंगा कि कौन कौन सस्पेंड हुए हैं. Now this was also a misery again. जब हमने स्टेटमेंट दी थी तब माई हस्बैंड एंड ऑल हैड रिकग्नाइज्ड 5 पीपल. हमने उनके नाम दे दिए थे, बाकी हमने कहा विल पहचान करके आपको बताएंगे. बट द 4th सस्पेक्ट, जो 4th कल्प्रिट, नॉट सस्पेक्ट एनीमोर, उसने मुझे, ही वॉज ट्राइंग टू गेट मी कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दिस पीपल एंड ही वॉज कमिंग टू द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन. माई सन केम आउट to pick up something from the car for his dad, and then he says, Mom, why are you talking to this man? And he told, he says, Uncle आप इससे क्यों बात कर रहे हो, ये तो मुझे मार रहा था. And then I realized the person जो मुझे compromise करा रहा है वो इन्वॉल्व था और मेरे को उसी बंदे को इन्होंने DSP सतनाम के साथ भेजा है कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए. Then I cursed him. I said, you should hang your uniform. अगर तुम आज मुझे कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो तो तब वहां पर क्यों नहीं लड़ाई रुकाई तुमने. Then all this happening, SSP Nanak, nothing. I called him up and he says, ma'am, I have not told you one thing. I said, yes SSP Nanak. He says, SSP Nanak कहते मुझे, ma'am, you called my wife and she is not police. I said, SSP Nanak, I have evidence. I called you whole night. You did not pick your phone. Your phone was switched off. You are a लेखा देखा ऑफ पटियाला. आप अपना फ़ोन ऑफ कर रहे हो तो मैं क्या करती. मैंने एक फ्रेंड से आपकी वाइफ का नंबर लिया और उसको कॉल किया कि
उसने भी नहीं उठाया। बाद में उन्होंने कॉल किया, बोला आपने कॉल क्यों किया? तो मैंने कहा आई हैड टू स्पीक टू हिम अर्जेंट, नाउ आई हैव टॉक्ड। And he says, you can't call my wife, she's not police. But I told him this there and then. I said, your wife may not be police, but when I am a army officer's wife and I am a army myself, I enjoy the perks of army. I stay in the army. I want gypsy, I want everything. I want MH, I want CSD. I cannot say I am not army. I said, if my husband is an army officer, I am part of that organization and I am responsible enough. I am responsible enough to listen to every problem of every Jawan or his wife. I said, if my husband is in the border area, if a Jawan will come to me and say, मेम साहब कोई problem है, तो मैं क्या बोलूँगी उसको? नहीं, साहब आर्मी में मैं नहीं हूँ. I said, your wife should have said, I will just give the phone to my husband instead of saying this.